नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता. पणजे, बेतूल आनी शापोरा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्यो कचेरी आसूनय बोटी लिपोवन दवरलेल्या बेकायद्यान रेंवेचो धंदो करप्यांक सोदून काडूंक जावंक ना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ही एकूच बोटी नोंद करूंक अधिकार आसलेलें खातें. सगळे कायद्या आड वचून रेंव काडटात देखून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान रेंव काडपी बोटी खातीर लायसन्सां दिवपाचें बंद केलां. कायद्या आड वचून रेंव काडपाच्यो बोटी नायबाग पुलाशी आसलेल्या तिराकोल नदीशी आनी तलारना पुलाशी आसलेल्या शापोरा नदीशी दिसतात. Captain of Ports is unable to trace sand mining boats since they are hidden, claims an official. Earlier, most of the boats were registered for land cargo. Some of these boats were used for sand transportation. Then they began using them for sand extraction. Now the Captain of Ports has stopped renewing licenses since most are doing illegal sand mining, an official said. When we go on the main this thing, the captain of port hardly finds much this thing, Okay. Unregistered, Okay. But, it is only when we go with a very small boat, with a small this thing, where these canoes are being hidden, inside actually this thing, Okay. which we are unable to trace actually. Okay. But Unless somebody. but most of Otherwise, the boats are registered, right? Yeah, what happened now? Most of the boats were registered. Okay. Thinking during the time of legal sand mining, okay, they were registered as a. So what happened? Whether they use it for sand or for any other carrying, they are registered as an inland cargo actually. Okay. Inland cargo. So what happened in the olden days? They used to carry wood, sand, tile, ash, a lot of things they used to carry. Okay. Now the same numbers they have converted and started using for this thing, transportation of sand. Okay. And from transportation they went into extraction of sand. Okay. Same numbers actually. Okay. But then what happened? We have not renewed their number because they have indulged into illegal trade. Okay. Okay, we have stopped issuing any this thing, renewal. We have stopped renewing their licenses. Okay. Because most of them are into this thing, illegal extraction. Okay. And what happened? There are traditional sand extractors. There are still who are dependent on that. And what happened? Because of their livelihood, some are now going to a lot of other things. Okay. Clinton D'Souza for Herald TV. उत्तर गोंयांत पेडणे उबो केलेल्या नव्या मोपा ग्रीनफिल्ड एअरपोर्टाची तपासणी करूंक उत्तर गोंयांत पयलें विमान देंवलें. आजून तयार जावंक नासलेल्या विमानतळाचेर इंडिगो विमान देंवलें तेन्ना मोपा विमानतळाक उबारून दवरप्यांक ही एकदमूच खुशालकायेची खबर. विमान धांवपटयेचेर धांवडायलें ताची पत्रकारांक चडोक दाखयली. हे खीण पळयात.
Maqbool and Vinod Mehtar for Herald TV. सोमारा दीस बायना वेळेशी 35 वर्सांचे पिरायेच्या बायनाच्या उमेश हरिजनाचो खून केलेलो मेळ्ळो. मेलोल्या मनशाचेर 7 ते 8 लोकांनी हथियारां घेवन अटॅक केलो म्हणटात. ताका अटॅक करपाचें कारण आदली दुस्मानकाय म्हणटात. मुर्मुगांवच्या पुलिसांनी खून जाल्ल्या जाग्याक भेट दिवन चवकशी केली आनी मोडें चिकाली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेलें. मुर्मुगांव DYSPचे सांगणे प्रमाणे 4 गुन्यांवकारी पडून भोंवतात. सध्या आमी काट्या बायणा आसा आनी हांगा एक शॉकिंग इन्सिडंट घडला. एक 35 इयर्स ओल्ड उमेश हरिजन हेचो एक 4-5 जाणांनी अटॅक करून तिथं मर्डर केला. मर्डर कित्याक केला तो आमकां रिजन खबर ना. मुर्मुगांवचे पुलीस सायटीर येयलेले आसा आनी तेची बॉडी सध्या चिखली हॉस्पिटलान प्रिजर्व आसा. पूण सध्या कित्याक मर्डर जालो तो आमकां कांय खबर ना. वास्कोच्यान किरण बोरकर. पहला भी 2 साल पहला वो लोग का मोटिव था, झगड़ा हुआ था छोटा बारीक उसका भाई का साथ, उमेश का उसका भाई का साथ. बाद में कॉम्प्रोमाइज़ भी किया वो लोग. इसके बाद फिर से 2-3 दोस्त लोग पे भी मार्केट में अटैक किया था वो लोग. हम पे भी अटैक किया था रविंद्र भवन का पास. ये पूरा DYSP PI को भी सबको पता है. उस टाइम ये लोग PI लोग का इधर कॉन्फ्रेंस था रविंद्र भवन में, तो लोग लाइव टेलीकास्ट हमारा देखा था लफड़ा होने का. तो हम लोग कोई कुछ नहीं था वो लोग से, तो भी वो लोग हमको बिना वजह का गाड़ी में रुका के उसका उमेश का विजय का साथ बात करके झगड़ा करके तो उसके ऊपर बम्बू हॉकी स्टिक लेके मारा. तो उस टाइम मेरे को भी हाथ को इंजरी किया था वो लोग. भाई को मारने से पहला मेरे साथ भी अटैक हुआ था. तो लोग कार में 6-7 लोग आया था. तभी भी मेरे को बम्बू गिम्बू लेके तलवार लेके मारने. मैं उधर से भाग के बच के निकला. नहीं तो उस दिन ही मेरे को भी मारने वाला था लोग. विजय और मेरा भाई उमेश तो वो मंडप में खाना खाने को ले गया था. वो एक अशोक चलवाड़ी बोल के एक दोस्त है, वो और 2 लोग गया था. तो जाने का टाइम वो लोग फुल प्लानिंग का साथ उधर रुका था. मतलब तलवार चाकू गीकू लेके लोग. एक कितना लोग था मेरे को तो पता नहीं, मैं नहीं था वहाँ पर. तो वो अशोक बोल के मेरा दोस्त है, उसने मेरे को फ़ोन मारा ऐसा ऐसा तेरा भाई को मारा, जल्दी आ बोल के. तो मैं जब भी कार लेके वहाँ पर पहुँचा तभी मतलब उसको मारा. तभी देखा तो वो लोग नहीं आता. तो मैं फटाफट कार में डाल के उसको भेजा. बढ़िया. मैं उमेश खाना खाने गया था. खाना खा के बाहर आ रहा था, गाड़ी से मारा. बराबर उसको पीछे से लात मारा लोग. कुराड़ी तलवार चाकू से भी बहुत मारा. उसको छुड़ाने गया तो पीछे से मेरे को भी पीठ लगा वो लोग. मैं साइड में भागा और वो लोग 6-7 लोग तक साथ में सब रेडी के सामान के साथ में आया था लोग. और 2-3 तलवार भी बैंड हुआ वहाँ पर. देखा तो बहुत पैर भी काटा उसका और उंगली काटा. और ऊपर से मैं डर के मेरा उसका भाई को फ़ोन किया इकबाल को. इकबाल ऐसा सब मार रहा, उसको जल्दी आ बोल के बोला. देखा तो बाद में आते थे एम्बुलेंस को फ़ोन लग रहा नहीं, ना पुलिस को फ़ोन लग रहा नहीं. लेट पहुंचा वाला. उससे पहले हम लोग कार में डाल के चिखली भेजा. IIT प्रोजेक्ट फकत सांगे उबो करतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. त्या प्रोजेक्टा खातीर जी जमीन वेचून काडल्या ती सरकाराची म्हणटूच तिचे खातीर कुशीन परवानगी मागपाची आनी हेर रिती करपाची गरज ना म्हूण ताणें फुडें सांगलें. सरकारा आनी IIT पंगडा मदें करार करूंक मातसो उशीर जाला देखून ताची रीत मातशें फाटीं पडल्या. एक पावट IIT पंगड जाग्याक भेट दितोच करार पुराय जातलो अशें सावंतान सांगलें. नोकऱ्यांचे आनी हेर नदरांनी ही IIT सांगेच्या मतदारसंघांत बदल हाडटलो म्हूण ताणें सांगलें. IIT गोंयांत करपाक जाय ही फाटली म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तरी 4 वर्सां वेगवेगळे कडेन प्रयत्न करता. पण एक गजाल निश्चितच सांगता की हे फावटी आमी जागा आयडेंटिफाय केल्या उपरांत मंत्री सुभाष फळदेसायन जी इनिशिएटिव्ज घेतल्या आनी जी पॉझिटिव्हिटी दाखयल्या तातूंत म्हाका निश्चित खात्री आसा खंय सरकारान उलोवन दाखोवपाची गरज ना. ओके, प्रॅक्टिकली मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक फावटी हांगाच जातली म्हणून सांगपाची गरज ना. आणि म्हाका निश्चितच खात्री आहा की तेणी ज्या पद्दतीचो इनिशिएटिव्ज घेतला की आमी फक्त जो पर्यंत ऑफिशियली डिक्लेअर करिना तो पर्यंत हांवें स्टेटमेंट करूंक नाशिल्लो. पण हांव एक निश्चित सांगता की तेणी इनिशिएटिव्ज घेतल्या आनी जागा जी आसा ही आमकांय खबर आसा ही सरकारी जागा आसा. त्या खातीर आमकां जागा IITक दिवपाक आमकां कोणा कडल्यान दुसऱ्या कडल्यान जागा घेवपाची गरज ना. आनी हे फावटी IIT जी आसा ही सांग्यारूच जातली. गव्हर्मेंट निश्चित आसा, फक्त ताजो टेक्निकली जेका आमी म्हणटा की दोनी IIT आनी सरकार हाच्या मदीं जो एग्रीमेंट करपाक जाय ताज्या खातीर थोडोसो डिले जाला आसतलो. बट तो ऑलरेडी आमी
IITच्या टिमीक कळयलां की तांची टीम फक्त हांगा एकदां येवन पळोवन ताज्या उपरांतूच एग्रीमेंट सायन जातलो. अदरवायज गोंय सरकारा कडल्यान सगळ्या पद्दतीचे म्हणजे थोडोसो उशीर जरी जालो सर्वे करपा खातीर आसत जाल्यार आमच्या कडल्यान पुराय तयारी आसा. आपल्या मतदारसंघान IIT जावप सगळ्यांत व्हडलो हो फायदो आसा आनी त्या IITच्या निमित्तान हांगासर जावपी उदरगत एखादी कॉलेज जाल्या उपरांत किंवा एखादी इन्स्टिट्यूट जाल्या उपरांत आपल्या मतदारसंघात पुराय उदरगत जाता पळय हो खऱ्या अर्थान फायदो आसा. जावपी हांगासलो जो एनवायरमेंट जो आसा हो एक एड्युकेशनांतलो बरो एनवायरमेंट हांगा क्रिएट जातलो. त्याच बरोबर ल्हानसान बिजनेसीस आमी जेका म्हणटा टॅक्सी बिजनेस आसतलो, रेस्टॉरंट बिजनेस आसतलो, इवन दो इन फ्युचर म्हणजे लॉजिंग बोर्डिंग फेसिलिटीज जे ह्या परिसरात जाय ती सगळी हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप जातली. 5000 प्लस म्हणजे सगळे स्टाफ स्टुडंट्स मेळून जेन्ना हांगा रावतले तेन्ना पुराय बिजनेस एक्टिविटी ह्याच भागांतल्या लोकांक ती मेळटली. Prasanand Pednekar for Herald TV. तोर निमोनाक घडोयतात ताका लागून 2 वर्सां भारतांत शिकोवप्यांक विचून काडून राष्ट्रीय पावंड्यार शिक्षकांक पुरस्कार दितात. सेतेंबराचे 5 वेर भारताचो पयलो उपराष्ट्रपती आनी देशाचो दुसरो राष्ट्रपती डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णनाचो जल्म दीस पाळटात. तो शिक्षणाक खूब महत्व दितालो. शिकोवप्या आनी शिकव्या मने कितलो खोल संबंद आसा तो जाणा जावंक हेरल्ड टीव्हीन जाणा जावपाचो यत्न केलो. A passionate teacher and a devoted student makes a truly beautiful relationship. According to me, the teacher-student relationship should be full of trust, mutual respect. It should be moreover a friendly relationship. The second question asked is whether this relationship has changed ever since I was a student. Yes, there is drastic change in this relationship. Earlier I feel that the relationship was unidirectional. The flow of knowledge was from the teacher to the student. But now it is bidirectional. The flow is from the teacher to the student as well as from the student to the teacher. The students have lots to share with the teacher and teacher too can learn a lot from it. Happy Teachers Day to all. आज सर्वपल्ली राधाकृष्णनाचो जन्मदिन. ह्या निमतान सबंद भारतभर शिक्षक दिन साजरो करता. तुमकां शिक्षक दिनाच्यो शुभेच्छा. भारतीय संस्कृतीन शिक्षक म्हणजे गुरू. गुरू हो निर्मातो. फुडली पिढी निर्माण करपाचें काम गुरू करता. आज ह्या निमतान सबंद भारतभर बऱ्या शिक्षकांचो सत्कार करतात. समाजान गुरूक बरें स्थान आसता. गुरू शिवाय विद्या पूर्ण जावंक शकना. प्रत्येक भुरग्याक शिकतले जाल्यार गुरू जायच. गुरू ब्रह्मा, गुरू विष्णू, गुरू देवो महेश्वरा, गुरू साक्षात परब्रह्म. तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीमती मारिया मोरेना मिरांडा, गोवा. Sagun Gade for Herald TV. गोंय काँग्रेस पक्षाचे समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान ऑक्टोबराचे 12वेर व 13वेर विरोधी पक्षाचो फुडारी विचून काडटले म्हूण कळीत केलें. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचो गोंयची जबाबदारी सांबाळपी मुकुल वासनीक गोंयांत येतलो आनी विशय सुटावो करतलो म्हूण अमित पाटकरान सांगलें. काँग्रेस पक्षाचे आमदार मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत हांचे विशीं विचारतच तांचे आड डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशनां घाल्यांत अशें पाटकरान सांगलें आनी काँग्रेस पक्ष स्थिर आसा हेंवूय सांगूंक तो फाटीं रावंक ना. काँग्रेसाची भारत जोडो यात्रा निमित्तान घडोवन हाडलोले पत्रकार परिशदेंत पाटकर उलयतालो. CLPचे पयरूच सांगला मरे that on 11th or 12th our AICC in charge will also come. Mukul Vasnik ji also will come and will decide. Assemblyच्या टायमार लीडर ऑपोजिशन जावपाचो सांगला on 11th or 12th will finalize. बरें गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय म्हणटा
की बीजेपीचो स्पोक्स पर्सन जाला वो मायकल लोबो तेजेर कितें रिएक्शन करता? आय विल नॉट कमेंट ऑन वॉट विजय सेड. सो तुम्ही हे दोन MLA तुका सोडून दिल्या खंयचे MLA म्हणटात परत आतां तुका सांगला रिगार्डिंग ऑल MLAs what is the status we have told you why are you again asking we have filed disqualification petition on 2 so why again and again asking the same question. तुम्ही मेळ्ळेले स्पीकराक मेळ्ळेले डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकराक मेळ्ळा सो ही हॅज सेड दॅट ही हॅज सेंड अ नोटीस आय विल बी गोईंग अँड मीटिंग हिम अगेन दिस वीक दॅट वॉट इज द स्टेटस बाबा आमकां तरी अजून नोटीस येवना म्हणून. इज काँग्रेस इज स्टेबल? काँग्रेस इज स्टेबल वॉट इज द क्वेश्चन वॉट इज दिस क्वेश्चन काँग्रेस इज स्टेबल म्हणजे म्हटल्यार आय एम नॉट गेटिंग अ क्वेश्चन. म्हटल्यार तुमचे मिसकम्युनिकेशन जाता. काँग्रेस पार्टी आसा पयली इट is the oldest party and the largest party. So Congress is stable. And these questions what you are asking me, I have clarified on that question. Again you are asking the same question. Regarding those two, I have clarified 3 months back. दिगंबर कामत कांयच तुमचे म्हणल्यार खंयच्याच एक्टिविटीक तुमचे कडेन पार्टिसिपेट जायच ना पळय तो एक सायलंट मोडान आसा तो. That you have to ask him. He is a senior leader, so I can't. Regarding these two MLAs, how can I answer on their behalf? This you have to ask him. No, why is he ॲज अ पार्टी प्रेसिडेंट तुम्ही त्यांच्या वांगडा कितें कम्युनिकेशन केला का बाबा तुम्ही कितें नाराजणी आसा म्हणून? ना आम्ही आमच्या लेवलाचेर वी हॅड स्पोकन टू देम. इट इज देअर पर्सनल. ही इज अ सिनियर लीडर देअर. आय कांट टॉक ऑन दिगंबर कामत. ही इज द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. बाकीचे आस्क हिम पर्सनली. बाकीचे सिनियर लीडर्स तो तुमचे दिसती पडना प्रेस कॉन्फरन्साक. तुमचे सिनियर लीडर दिसली. तुमचे कितले सिनियर लीडर आसा ते आसा ते. No, which press conference? Today's press conference is on that Bharat Jodo Yatra. Both our district presidents were there. Prasad Polji for Herald TV. सप्टेंबराचे 7वेर तान काँग्रेस पक्ष कन्याकुमारी ते कश्मीर पर्यान 10 राज्यांनी आनी 2 संघ प्रदेशांनी 3570 किलोमिटरांची वाट तांकून भारत जोडो यात्रा घडोवन हाडपाचो आसा अशें काँग्रेस राष्ट्रीय मुनियारी विंग कमांडर अनुमा आचार्यान सांगले. देशाक 3 दुयेंसां आसात. गिरेस्त आनी गरिबां मदें अंतर वाडत वेता. समाजान धर्माच्या नांवान मोतां फोडटात आनी सगली पदवी एकलोच हाताळूंक सोदता अशें तिणें सांगलें. चवकशी करपी एजन्सी केंद्र कडेन पळयतात, उजवाडा येवपी खबरो बंद करतात आनी राज्यांनी आसलेले सरकार उडयतात अशेंय तिणें सांगलें. भारत में 3 बीमारियां लग गई और एक साथ लगी रही. बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स तो हमको अलग अलग दिखते हैं, वो बहुत ज्यादा है नंबर्स में, लेकिन वो बीमारियां क्या है? पहली बीमारी तो है कि जो गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस बहुत बढ़ रहा है. आप सभी ने देखा है, गरीब और भी गरीब हो रहा है, अमीर और भी अमीर हो रहा है. 192 लोगों के पास देश का 60% से ज्यादा दौलत है. तो ये जब हालात है, यानी कि आर्थिक असमानता बीच में बढ़ी है. और उसमें क्या हुआ है, कैसे बढ़ी है? तो बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, GST खाने की चीजों पर लग गया है. तो ये सिम्टम्स है, ये अलग अलग चीजें हैं और कुल मिला के क्या है कि आर्थिक असमानता लोगों के बीच में बढ़ी है. दूसरी बीमारी है जो सबसे बड़ी बीमारी है, इस सब के आप भी शिकार हैं, वो बीमारी है सामाजिक ध्रुवीकरण, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी. और उसमें हम लोगों को कभी उनके धर्म के बारे में, जाति के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, खाने के बारे में, वो क्या भाषा बोलते हैं उसके बारे में, उसके कारण हम उनको या तो ह्यूमिलिएट करते हैं या उस तरह का उनके साथ व्यवहार करते हैं. तो ये जो सामाजिक पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण जो है, इसमें आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को निकाल देते हैं. बचपन के दोस्त, एकदम गाढ़े दोस्त, वो राजनीतिक विचारधारा मिलती नहीं तो इसको निकालो, इस तरह की बातें होती हैं. ये सामाजिक ध्रुवीकरण. तीसरी चीज जो सत्ता का केंद्रीकरण है, आप सभी मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल जानते हैं, आपके ही बॉस आके यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं करते. सभी को एक डिवीजन ऑफ लेबर है, एक व्यक्ति ये काम करेगा, दूसरा ये करेगा. लेकिन अभी सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, और सत्ता का केंद्रीकरण होने से बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि सब कुछ, जैसे एजेंसीज हैं, वो सरकार के ही हाथ में है, वो अपने स्वायत्तता से काम नहीं करती, ऑटोनॉमी से काम नहीं करते, वो सरकार की तरफ देखते हैं. जो टीवी में हम डिबेट देखते हैं, उसका भी मसौदा सुबह ही आता है, इन्हीं सब्जेक्ट पे होगा डिबेट और दूसरे सब्जेक्ट पे डिबेट नहीं होगा. कल दूरदर्शन ने पूरे दिन महंगाई पे हल्ला बोल इतना बड़ा
इतनी सफल आंदोलन हुआ कल दिल्ली में, उसको नहीं दिखाया। तो ये एक और चीज है कि वो सत्ता के कंट्रोल में, तो जब कंट्रोल होता है, इसी तरह से जो राज्य है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उनको तंग करना, उनको समय पे उनका जो जीएसटी का शेयर है या दूसरे शेयर्स है वो नहीं देना, और जो सरकार है उसको किसी तरह पैसे देकर जो लोगों की चुनी हुई सरकार है उसको गिरा देना। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा अलग अलग दलितों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर जो क्रूरता है, अत्याचार है, वो बढ़े हैं। तो और दूसरे धर्मों के साथ अदरिंग बढ़ी है। तो ये 3 बड़ी बीमारियां हमको एक साथ लग गई। प्रसाद पोटजी फॉर हेरल्ड टीवी। हिंदू गौरव्यांनी गणेश देवाक पुजून 5 दीस पर्यंत ताची भक्ती केले उपरांत गोंयच्या साबार वाठारांनी शेवटी गणेश देवाचें आयतारा दीस विसर्जन केलें। घरांत पुजा आनी आरती करतूच गणेश देवाच्यो मुर्त्यो फुलांनी नेटयलेल्या मोटरांचेर घालून घुमटां दोलांच्या तालार आनी फोगोट्यांच्या घणघणान खुशालकायेन गणपती बाप्पा मोरया, फुडच्या वर्षी लवकर या म्हणीत आनी फुडल्या वर्सा देवान बेगीनच परत येवचो म्हूण उद्गारून भावार्थ्यांनी गणेशाक पावयलो। सोमार दीस पेडणेच्या चांदेल वाठारांत उक्ते बायांत गोंय रेडो पडलेलो ताका रानां खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी वयर काडलो। तो गोंय रेडो शेतान भितर सरलो आनी निसरून शेतान आसलेले बांयत पडलो म्हणटात। रान खात्याचे अधिकारी रोखडेच घडणेचे जाग्यार पावले आनी त्या गोंय रेड्याक वाटावपाचो प्रयत्न केलो। देडाक सुमार म्हाका कॉल येयल्लो। कॉल येतकूच जायन सोमतच आमचो रेस्क्यूअर विराज परवार हांवें ताका कॉन्टॅक्ट केलो आनी बुधाजी हसापूरकर म्हणून एक रेस्क्यूअर आसा ताका कॉन्टॅक्ट केलो। सो ते हांगासर पावले सोमतेच आनी मागीर एक ना म्हटल्यार एक अर्द्या वरान सुमार हांव पावलो हांगासर आनी मागीर आमी आमचें जें रेस्क्यू ऑपरेशन आसलें तें स्टार्ट केलें आनी मागीर तुमी पावले, तुमकां खबर आसा कशा पद्दतीन आमी ते सर्तीचे प्रयत्न करून ताका वयर काडलो आनी आतां ताका आमी नॅचरल फॉरेस्टान सोडलेलो आसा। तो आतां आपल्या फॅमिली बरोबर कशें तरी तांकां खबर आसा ते स्मेलाचेर म्हणल्यार आपलें जें कशें हें आसा पळय हॅबिटेट आसा पळय तितून ते एका म्हाका सोदीत ते वयता कळ्ळें तुका। तो आतां आपल्या फॅमिलीन कसो तरी पावतलो, एकदां फक्त तो बांयतल्यान वयर येवपाक जाय आसलो, मागीर ते नॅचरली आपले हे कशें सोदून काडटा। पावर फेन्सिंग केले, पावर फेन्सिंगाचो तेंच्यांनी 0 व्हॅल्यू केला। जवळ जवळ 4.5 फुटा वयल्यान ते जंप मारून भितर शेतांत वयता, कोणी डिस्टर्ब करूंक ना जाल्यार ते तशाक तशे भायर सरता आनी वयता। कोणी डिस्टर्ब केलो तरूच ते फसता, अशें पडलेलेच ना। तेंचे फक्त आपले तितले ते जनावर पळयता आनी ते गेले काय मागीर ताका सेक्शनां वेगवेगळे लागता, ते मागीर गेलो काय ते ऑफिसर पळयता। सो फॉरेस्टरांनी टायमार एक्ट जावंक ना म्हणून आतां अशें शेतान येवन बायन पडलो। ते गवेरेडे जालेच तशे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एक्ट जे आहा तांकां डिस्टर्ब करप ना, तांकां त्रास करप ना। स्वता शेतकार जरी मेलो जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काय पळयना। प्लॉट भेंड्यांचो आख्खो एक प्लॉट भेंड्यांचो एक 2 मोटर आनी म्हाजे कंटिन्यू हे आसले पायपींग आसले ते फोडून गेले आनी हे एक बायन पडले आनी सर्व घातलो तो गेलो। मकबूल मलजीमनी फॉर हेरल्ड टीवी। द्रामापूरच्या द्रामापूर स्पोर्ट्स क्लबान आयतारा दीस घडोवन हाडलेल्या 43rd सेंट जोसेफ फेस्टिवल फुटबॉल टुर्नामेंटांत माजोड्डाच्या सेंट रॉक यूथ क्लबान गोवावेल्या आड 3-1 गोल मारून क्वॉर्टर फायनल्सांत प्रवेश केला।
म्हजे आनी घालची And after Aruna for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल्ड टीव्ही खबरांपत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.